Good evening, everyone. Today, the vocabulary part was missing, and a lot of you have requested to update you with the idioms which people are using right now. So what you need to do is to learn these idioms. These idioms are very, very common, and they are commonly used in speeches, in debates, in your writings, in your speaking. So you cannot get away without these idioms. So this will always give you an edge to your communication. So let us take some idioms, and I hope it can help you. The most important thing is that they mean a little different. Idioms are made of two or more words. They may have different meanings, but if you put them together, the meaning will be entirely changed. For example, the first is the idiom under the weather. Under the weather. I hope you can see it. Which means you feel sick. Under the weather, आपकी तबीयत अगर खराब हो जाती है तो आप यूज कर सकते हैं. Either you can say I am not feeling well, I am sick, I am ill, or you can simply use the idiom I am feeling under the weather. It means आपकी तबीयत अभी उतनी ठीक नहीं है. The sentence which you see is, my friend was feeling under the weather. She did not come to college. Why didn't she come? She was feeling a bit under the weather. It means she was not feeling well. So a very common idiom, under the weather. When you feel sick, you can use this. The next, cold feet. Cold feet जब आप nervous हो जाते हैं, when you become nervous, for example, जब आपको बुलाया जाता है to make a speech or to say something in the classroom, what happens? You get nervous or you get butterflies in your stomach. Butterflies in the stomach तो ऐसा कुछ होता नहीं है, but it means the same thing. You are getting butterflies in the stomach. It means you are getting nervous. My friend was feeling under the weather. This was why she did not come. She was sick. So, cold feet. She was getting cold feet and could not speak. She was getting nervous, and so she could not speak. The next is apple of my eye. It means आँखों का तारा, आँखों सबसे प्यारा. He is the apple of my eye. या सबसे प्यारा, सबसे somebody जो बहुत आपको प्यारा है. Someone whom you are very fond of or you like. My sister is the apple of my eye. It means आपका बहुत आपका प्यारा है, बहुत प्यारी आपकी sister है. She is the apple of your eye. The next is set the record straight. किसी चीज को clarify करना, इसको ठीक करना, सेट करना. ये क्लियर नहीं है, प्लीज सेट इट क्लियर और प्लीज सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट. किसी चीज को क्लैरिफाई करना, समथिंग जो कि डाउट है, सम कंफ्यूजन है. In order to set the record straight, the umpires checked the camera to review the previous shot. तो क्या होता है? Doubts in the cricket field. So what happens? The umpires check out करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या actually क्या था. The next is kill two birds with a stone. Kill two birds with a stone मतलब एक तीर आप चलाते हैं और आपको दो फायदे मिल जाते हैं. Achieve two results by doing one thing. So none of us understood that he was trying to kill two birds with a stone when he joined the military or when he joined the armed forces. Two results, achieving two results with one activity by doing one thing. The next is snowed under. बहुत ज़्यादा व्यस्त होना, बहुत ज़्यादा busy होना. To be very busy. Snowed
under. My teacher seems to have been snowed under for the last few weeks. We were snowed under for the last couple of weeks, getting students ready for the 15th August program. So we were all snowed under. Like when we have back-to-back classes, you are terribly busy. And then you can say that, okay, we were snowed under, so we could not do anything else. Snowed under, to be very busy. Walk on eggshells. अब eggshells पे तो कोई चलता नहीं है. मतलब क्या होता है इसका? To be very careful with your actions and words. मतलब कदम आप फूंक फूंक के जब रखते हैं, then you are walking on eggshells. Talking to my mom about my grades, about my marks, made me feel like I was walking on eggshells. You were very careful, you were very particular about क्या marks आपको मिला है. तो when you were talking to your mother, you were very careful. You were very careful with your actions and with your words. The next is make two ends meet. निर्वाह करना, make two ends meet. कोई बहुत कम कमा रहा है, पैसे कम आ रहे हैं उसके घर में, तो बड़ी मुश्किल से वो निर्वाह कर पाता है. To have just enough money for all your needs. अगर किसी की सैलरी बहुत कम है तो उनको मुश्किल हो जाता है. They are finding it really difficult to make both ends meet. एक और idiom है इसका, hand to mouth. उसका मतलब यही है, कम पैसे घर में आना और खर्च बड़ी मुश्किल से खर्च चलाना. The next is to be at loggerheads. Loggerheads का मतलब होता है झगड़ा लड़ाई. To quarrel or disagree. Children are always disagreeing and fighting with each other. They seem to be at loggerheads over something or the other. किसी न किसी बात पे वो झगड़ा करते रहते हैं. So they are at loggerheads. They are quarreling, or they are disagreeing with each other. At loggerheads. The next is pretty penny. बहुत महंगा. Pretty penny. Expensive. The car she wants will cost a pretty penny. जो गाड़ी उसको चाहिए, जो कार उसको चाहिए, उसका अच्छा खासा दाम है. It is very costly. So the car she wants will cost a pretty penny. The next is through thick and thin. मतलब हर वक्त. At all times, both good and bad. अच्छे वक्त में भी और बुरे वक्त में भी अच्छे दोस्त आपका साथ नहीं छोड़ते. My friends are always there. My friends are always there for me. Through thick and thin. अच्छे वक्त में भी बुरे वक्त में भी किसी के दोस्त अगर साथ हैं तो क्या बात है. Through thick and thin. हर वक्त का साथ. The next is beat around the bush. डायरेक्टली कोई बात नहीं कह करके आप घुमा फिरा करके कहते हैं. आपको अगर कुछ पैसे चाहिए होते हैं पेरेंट्स से, तो आप अचानक से आप सडनली जाके नहीं बोलते हैं, आप स्ट्रेट अवे नहीं बोलते हैं कि मुझे पैसे चाहिए. आप कुछ इधर की कुछ उधर की, आप पूछते हैं कैसी तबीयत है, क्या कर रहे थे, सब कुछ ठीक है, एंड बाद में धीरे से बोलते हैं आप कि यू वांट सम मनी. तो घुमा फिरा के कोई बात कहना, डायरेक्ट नहीं कहना. इट मीन्स कभी कभी तो गुस्सा लग जाता है, फिर बात क्या है पहले बताओ, कम स्ट्रेट, व्हाट डू यू वांट. लेकिन किसी किसी को आदत है कि घुमा फिरा के बात करने की और डायरेक्ट बात नहीं करना, विच समटाइम्स इट इज वेरी अनोइंग, क्योंकि आपका बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है. माई नेबर केप्ट बीटिंग अराउंड द बुश एंड डिड नॉट गिव अ डायरेक्ट आंसर. My neighbor kept beating around the bush and did not give a direct answer. It means वो घुमा फिरा के बात कर रहे थे और डायरेक्ट आंसर वो नहीं दे रहे थे. The next is cut corners. किसी काम में कोई कोताही कर देना, reduce expenses or reduce activity or reduce intention. जल्दीबाजी में कोई काम कर देना. Purchase something in the least expensive way or do something easily. मतलब ऐसे ही चलो निभा देना है, कर देना है, फिनिश कर देना है. You cut corners. आप अपने 100% जब नहीं डालते हैं, then you cut corners. I often cut corners in order to buy something for my brother. तो जब भाई की बात आती है तो आप उसको जल्दी से किसी तरह से निभा देते हैं और
कटिंग कॉर्नर्स वही होता है, कहीं कुछ कमी रह जाती है उसमें. The next is steal someone's thunder. To steal someone's thunder means किसी और का काम किया हुआ उसको आप अपना बना के पेश कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपके फ्रेंड ने आपके साथ मिलकर पीपीटी बनाया और ज्यादा उसने मेहनत करी है, लेकिन आप उसको अपना बना करके और उसको प्रेजेंट कर देते हैं कि दिस इज मेड बाय मी, देन यू आर स्टीलिंग हिज थंडर. उसका किया हुआ काम को आप अपना बना के आप पेश कर रहे हैं. यू आर प्रेजेंटिंग somebody else's work as your own. Doing something to gain praise and preventing another person from gaining praise. जिसका काम किया हुआ है वो यूं ही रह जाता है और वो सारी वाहवाही आप ले लेते हैं. Her friend claimed that Manish tried to steal her thunder. ऐसा होता है, होना नहीं चाहिए बट ऐसा तो होता ही है. The next is call it a day. जब आप गुड बाय कहते हैं, ओके बहुत देर हो गई, चलना चाहिए घर, लेट्स कॉल इट अ डे. To stop doing something or end the day, चलो let's say goodbye, let's call it a day. जब गुड बाय बोल के घर जाते हैं. We decided to call it a day as everyone was tired. सभी थक गए थे तो हम लोगों ने क्या सोचा, चलो चलते हैं फिर कल मिलेंगे. Calling it a day to say goodbye. The expression better late than never. To do something rather than not doing. देर से करेंगे लेकिन करेंगे जरूर. लेट होगा, समय लग जाएगा, करेंगे जरूर. To do something rather than not doing at all. Well, we thought it was better late than never. But where are the others? बाकी लोग कहाँ हैं? करेंगे जरूर, देर सही लेकिन करेंगे. Stick to your guns. To stay morally strong or be firm in decisions. When you stick to your guns, आप अपनी बात पे कायम रहते हैं, आप अपने morals पे कायम रखते हैं, आप अपने ethics पे कायम रहते हैं. To stay morally strong or be firm in the decisions, especially when being opposed. The lawyer asked Rakesh to stick to his guns if he wants to win the case. कि जो बात आपने कही है उसको चेंज नहीं करना है, whatever it is. अपने वर्ड्स पे स्ट्रांगली रहना है, right? Another very beautiful, leave no stones unturned. Leave no stones unturned का मतलब होता है किसी भी स्टोन को बिना उल्टे नहीं रहेंगे. It means